today let's start with chapter number 2, MS Word 2021. In this chapter, I will tell you about page formatting, column formatting, paragraph formatting, and printing a document. Now, in this chapter, I will tell you about page formatting. We have page formatting. Making changes in the setting of page is called page format. जो पेज सेटअप ग्रुप होता है पेज लेआउट टैब का, it is used for page formation. Now, what are page margins? Margins are the blind spaces around the edges of a page. There are 4 margins: top margin, left margin, bottom margin, or right margin. Now, types of margin, first is normal, जो equal margin होता है on all side. Narrow, ये small margins होते हैं. Wide, ये large margins होते हैं. Custom, you choose your own margin. इसमें आप जैसा चाहे अपनी मर्जी से अपने type का margin use कर सकते. Now, what are the steps to change page margin? Go to layout tab, click on margin, select margin type or click on custom margin to set your own. Now click OK. Now step to set margin using ruler. अब आप ruler का use करके कैसे set कर सकते हैं? Click on the view tab, check the box next to the ruler. Now to adjust the margin, आप ruler का use करते हो and drag up or down for top and bottom margin. Now changing the page orientation. What is orientation? It refers to direction along the length and along the width in each page. First of all, you will go out to the layout tab, click on orientation, choose portrait or landscape view. आप horizontal, vertical दोनों use कर सकते हो. Now you have to setting paper size. Go to layout tab, click on size. You choose the paper size like A4 or black. Now inserting a page break. A page break indicates the end of a page. The step to insert a page breaks are as follows. Click where you want a new page to start. आप click करोगे जहाँ से आप नया पेज start करना चाहते हो. Then you will go to insert tab. Then you will click page break. A new page will start. और नया पेज start हो जाएगा. These steps will help you to formatting your page easily. And now you can come to column format. आप अब column formatting भी कर सकते हो. Now, what is column formatting? By default, जो Word document है, it has one column in a page. And the document can be formatted to have more than one column, like we can see in newspaper, magazine. Now, simple column option. If we talk about simple column option, column are split your text into section. Like you have one column default, 2 column, इसको आप 2 section में करते हो, और 3 column जिसको आप 3 section में क्या करते हो, split करते हो. Now, set to simple column, go to layout tab, click on column, choose 1, 2 or 3 column from the list. Then we have more column option. Go to layout tab, click on column, choose more column option. A new window will open, and from here what you can do, you can pick how many columns you want, adjust the space, और आप line को भी between the column adjust कर सकते. Click on OK to apply your changes. आप OK पे click करेंगे जो भी आपको changes apply करनी. Then we have paragraph formatting, जो आपको help करता है to control how your textbook on the page, and you can change the spacing between the before and after the paragraph, and how text is aligned. Now line spacing, जो control करता है amount of space between the each line. You can make the lines close together for further start. Now select the text you want to change. You can select a single paragraph. आप single paragraph या multi paragraph दोनों को क्या कर सकते हो, select कर सकते हो. Then you will go to home tab. आप home tab पे जाएंगे and look for the line and paragraph spacing button in paragraph section. Click on the button to see a list of spatial options. जैसे 1.0, no extra space. 1.5, more space between the line. Then we have 2, double spacing होगी. Line के बीच में double space. Now click on the option you want and the line spacing will change from the selected text. जो भी आप text select करोगे, line spacing उसके हिसाब से change हो जाएगी. Paragraph spacing, जो control करता है the space before and after paragraph. This makes the text easier to read by adding extra space. First is select the paragraph you want to format. Go to home tab. Click on line and paragraph spacing. आप line और paragraph spacing button पे दोबारा से click करेंगे. If the drop down menu appear,
एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब आप एक्स्ट्रा स्पेस को ऐड कर सकते हो बिफोर द पैराग्राफ. एड स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ. मूव स्पेस बिफोर द पैराग्राफ, आप एक्स्ट्रा स्पेस पे जो मूव कर सकते हैं. रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ. Then we have click on the option you need, and you can also click line spacing option. Now setting alignment, it determines how text is positioned on the page. You can change both vertical and horizontal. Vertical alignment refers to position of text. किसमें में आपके टॉप बॉटम पेज मार्जिन के पास. Then we have horizontal alignment जो किससे रिलेट करता है, लेफ्ट और राइट पेज मार्जिन. Now changing the vertical alignment. The steps to change: click the page layout tab in the page setup group. Click the page setup dialog box launcher और आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा. Then you will click on the layout tab in your vertical alignment box and click on the option you want that light will work. Click the whole document of this point forward and then you will click OK. Then we have types of alignment. We have left alignment, center, your right or justified. First is left. Text lines up to left side of the page, the most common alignment is center between the left and right margin. Then right alignment जो text line होती है up to the right side of the page. Then justified, text is spread out, so both the left and right sides are even. जैसे आपकी newspaper और books की. Then we have step to set alignment. There are many steps like select the text you want to align, go to home tab. In the paragraph section, what you will see, 4 alignment buttons. That we have aligned left, जो left alignment होगा, center alignment, right alignment और justify. Now additional tips. Indenting paragraph. You can also set indents to move the start of your paragraph. Then आप bullets और numbering का, देखा ना हम ऐसे करके bullets कर देते हैं या फिर numbering का use कर देते हैं. तो आप ऐसे paragraph में आप if you want to choose numbering, you can choose numbering. Bullets आपको डाल देता, bullets भी डाल सकते. नाउ प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट. अब आपने क्या करा, अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया, उसको प्रिंट करना. तो हाउ यू विल प्रिंट, भाई आपको फिजिकल कॉपी चाहिए. हाउ यू विल प्रिंट, चूज अ प्रिंटर. इफ मोर देन वन प्रिंटर इज कनेक्टेड, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू टू सेलेक्ट करेक्ट. नाउ सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉपीज. अब नंबर ऑफ कॉपीज सेलेक्ट करें. इन द बॉक्स नेक्स्ट टू कॉपीज टाइप हाउ मच कॉपी यू नीड. भाई आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, आप सिलेक्ट कर सकते. चूज अ स्पेसिफाइड पेज. ठीक है, आपको कितने पेजेस को या कितने को प्रिंट करना है. टू प्रिंट ऑल पेजेस. टू प्रिंट सर्टेन पेजेस आप डाल सकते हैं कि आपको 1 to 3 चाहिए, 1 to 5 चाहिए या 3 to 4 चाहिए. जो भी आपको प्रिंट चाहिए आप उसको क्लिक कर सकते. नाउ मोर ऑप्शन. कलर और ब्लैक, भाई कलर चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए. इफ यू हैव कलर प्रिंटर यू कैन चूज टू प्रिंट इन कलर और ब्लैक और व्हाइट. कलर भी ब्लैक व्हाइट दोनों बस. पेज ओरिएंटेशन, सेलेक्ट पोर्ट्रेट, वर्टिकल और लैंडस्केप, वो डिपेंड करता है. देन वी हैव पेपर साइज, कि वो देखो कि वो A4 साइज है या फिर कैसा है, वो आपको सिलेक्ट. प्रिंट प्रीव्यू मतलब बिफोर प्रिंटिंग चेक योर हाउ योर डॉक्यूमेंट विल लुक बाय डूइंग प्रिंट प्रीव्यू ऑन द राइट साइड. देन वी हैव फाइनल स्टेप. आफ्टर यू हैव चेक्ड ऑल द सेटिंग, you will click on print button and your document will start printing. These steps will help you to print your document. ये आपके different steps है जो आप follow कर सकते हैं अपने document को print करने में. Right? Hope you understood. That's all for today. Thank you.